गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट। पिछले कुछ दिनों से मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। कल का ट्रेडिंग सेशन भी काफ़ी वॉलेटाइल रहा। जो पहले के सेशन में अगर देखें, स्टार्ट ऑफ द सेशन द इंडाइसेस विटनेस पॉजिटिव ट्रैक्शन, बट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन इंडेक्स में करेक्शन देखा गया ऑफ ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स फ्रॉम द हाई पॉइंट ऑफ द डे। जानते हैं कि आज का ट्रेडिंग सेशन में इंडेक्स के लिए कौन से की लेवल्स रहेंगे, एज वेल एज द मेन सेक्टर्स विच आर एक्सपेक्टेड टू आउट परफॉर्म इन ट्रेड टुडे। फर्स्ट अप, कमिंग टू द अपडेट इन द ग्लोबल मार्केट्स इन ट्रेड यस्टरडे। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट्स में एक स्ट्रॉन्ग सर्ज देखा गया, वेर इन द S&P 500 विटनेस्ड अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, क्लोजिंग at levels of 5792, up 0.7%. Dow was up 1.03% and the Nasdaq advanced 0.8%. Going ahead for the S&P 500, it is likely to continue its northward journey and test 5860 followed by 5920. The key support levels would be the levels of 5750, 5730 levels. अगर हम ब्रेंट के बारे में बात करें तो ब्रेंट हैज़ एंडेड ऑन अ नेगेटिव नोट फॉर द सेकेंड consecutive trading session. However, it has taken support near its 20-day EMA level and witnessed a minor recovery. Going ahead, the zone of 77.5078 will act as the immediate hurdle for Brent Oil. Coming to the dollar index, the dollar index has surged above its 100-day EMA level for the first time after July 2024. Going ahead, it is likely to continue its upward journey and test the levels of 103.20 followed by 103.50. Coming to the update regarding Nifty, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में जैसे मैंने कहा था कि the first half was with bullish momentum was seen in the market, with the Nifty marking a high of 25,234. However, selling pressure emerged leading to a sharp correction of over 250 points and the index closed below the mark of 25,000 with a cut of 0.12%. Most noteworthy, on the daily scale, the index has formed a bearish candle with a long upper shadow, reflecting significant selling pressure at higher levels. Going ahead, the zone of 24,900, 24,850 will act as the immediate support for the index. Any sustainable move below the levels will lead to further selling pressure towards the mark of 24,700 followed by 24,550 in the short term. On the upside, the resistance has shifted lower towards the mark of 25,220 levels. Any surge above 25,220 would lead to an upside towards 25,310 followed by 25,380 levels. Coming to the option chain data, that is today's expiry. 25,100 has significant call open interest followed by 25,200, and on the put side it is seen in 24,900 as well as 24,800. अगर हम लोग वीकली पीसीआर के बारे में डिस्कस करें, करंट वीकली पीसीआर 0.54 पे जो दर्शा रहा है कि सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग अभी भी है सिस्टम में. दैट्स वाई द पीसीआर इज बिलो 1, while monthly PCR is at 1.12. Coming to the update regarding Bank Nifty, तो Bank Nifty के जो weekly expiry था in trade yesterday, wherein the index also witnessed selling pressure from the higher levels. The index corrected over 700 points from the high point of the day and ended the session at 51,000, close to the 51,000 mark. Going ahead for Bank Nifty, the zone of 50,600 will act as the immediate support. If the index slips below the mark of 50,600, it may witness further selling pressure, in that case testing the levels of 50,100 followed by 49,800 in the short term. On the upside, if you see, the resistance for the index is seen closer towards 51,450 followed by 51,800. If we discuss the option chain data, that is for next week's expiry, 51,500 has significant call open interest followed by the 52,000 strike, and on the put side it is mainly seen in 51,000 as well as 50,500. If we discuss regarding the PCR, that is weekly PCR currently stands at 0.92, while the October monthly series PCR is at 0.85. Coming to the key indicators, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में डिस्पाइट दी सेलिंग प्रेशर, द एडवांस डिक्लाइन रेशियो tilted in favor of the advancing counters,
mainly due to the broad outperformance which was seen in the mid cap and the small cap space. कमिंग टू द की सेक्टर्स, तो टेक्निकली जो सेक्टर्स रिलेटिवली जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं करंट जंक्चर पे वो है निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर। निफ्टी हेल्थ केयर में एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी देखा गया है। हमें लग रहा है कि आगे जाके भी ये दो सेक्टर रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर सकते हैं अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। कमिंग टू दी FII DI डेटा, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में कैश मार्केट में FIIs ने सेल किया टू द ट्यून ऑफ 4,562 करोड़। ये पूरे सीरीज में अगर हम देखें काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखा गया है फ्रॉम दी FII साइड, while DIs countered them to a large extent, purchasing 3,508 crores in the cash segment. That's a wrap of today's edition of the podcast. Thank you for regularly tuning in. Do tune in tomorrow for more market updates and insights. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.